यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशममयान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध और 69वां सर्ग अभी भी हम उसी के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। कल हम ये देखे थे वशिष्ठ जी जो राम जी को समझा रहे हैं प्राणनाश से मनोनाश नहीं होगा, ना प्राणनाश होता है ना मनोनाश होता है। मरने के बाद कोई नाश नहीं होता है, शरीर स्थूल शरीर नाश होता है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मनोनाश, destruction of the mind, complete annihilation. So that doesn't happen when the soul dies in the I sometimes use some peculiar style of English in the body. In the physical body. That means physical body dies and the soul never dies. It changes the body. So at that stage, the mind nor the prana, nothing dies. There is no destruction of it.
We saw so many examples and logic yesterday. तत्व ज्ञान से अवासीन भाव रूप वासना रहित हो जाना रूप अपने नाश को मन प्राप्त करता है और प्राण से शब्द को प्राप्त नहीं करता, स्पंद को प्राप्त नहीं करता है। परिशेष में शांति ही अवशिष्ट रहती है। When the decay of mind happens, then it cannot contact the vibrations of prana, and nothing it can do. So in the end remains the absolute peace and silence. That is called liberation. ज्ञान से वासना का नाश कैसे होता है? How the mind gets destroyed by knowledge? इसी शंका पर उसके हेतुभूत द्वैत के बाध से यह हो जाता है करके यह उत्तर दे रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, ज्ञान से सभी पदार्थों में असत्यत्व भलीभांति पहले सिद्ध हो जाता है और तदनंतर हे भद्र, वासना का विनाश से प्राण और चित्त का विनाश हो जाता है। द प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड बाय वशिष्ठ जी महाराज टू श्री राम। ज्ञान से सभी पदार्थों में असत्यत्व भली भांति पहले सिद्ध हो जाता है। If there is dawn of knowledge, in the very beginning what happens? All the objects with name and forms, they lose their existence. They don't remain as they were before. Their existence is lost by the power of knowledge. How the existence will be lost? Just as the fire makes the dry wood into ashes, similarly all the forms with names will be destroyed. Knowledge is the form of fire. It can burn anything. So first of all, there is a destruction of the form and name. हम साधारणतः क्या बोलते हैं जी? कोई मर गया तो हम क्या बोलते हैं? अरे बेचारा पंडित था ना, मर गया। पंडित कौन पंडित था जी? उसका नाम बता दूंगा मैं। क्या नाम था उसका? अरे यार, बंदाणी। मर गया ना। अच्छा, कैसे मर गया? बंदाणी मर गया? वो तो कोई इतना बूढ़ा नहीं था, कैसे मर गया? इसके ऊपर चर्चा चलता है। When we inform someone about the death of someone,
What do you say? Generally, what do you say? Such and such man. The name of the man you say. Such and such named man died. So you can imagine the form of the name. He has died. The name was given to the body only in the childhood. So body dies. How can you die? When the body grows, does the name grow? Do you grow? Everything happens to the body only. Of course, name changes. पहला तो नाम था बच्चा, फिर बाद में आया लड़का या लड़की, फिर नाम आया पप्पू या बप्पू, और फिर नाम आया राशि नाम कुछ और रामेश्वर प्रसाद, और वो फिर बदलते जाएगा। अभी नाम हो जाएगा वो LKG का स्टूडेंट। अच्छा, फिर नाम आ जाएगा वो नटखटी बच्चा। क्या क्या नाम नहीं बदलता है। नाम तो हर पल में बदल जाता है, काम के ऊपर और उसका गुण के ऊपर नाम बदल जाता है। वही रामेश्वर प्रसाद का नाम है था गोलू, या और भी कुछ कहते हैं मिंटू। क्या क्या नाम देते हैं, निक नेम्स। द नेम always changes. In childhood, so many names we have according to our qualities, our actions we do, nutty boy, or such and such boy, or good player, or very calm and quiet boy. All these, कहाँ गया वो दोस्त? नहीं आया। नहीं आया। अच्छा, तो कुछ ना कुछ हम नाम दे करके वो बदल जाता है, नाम फटाफट बदलता है। वो चश्मुद्दीन जो चश्मा पहनता है उसका नाम चश्मुद्दीन रख देते हैं। Every moment the name changes. As the action changes, so name changes also. In this way, form when dies, all the names die off. There is no name for it. So in this way, what happens to the soul after death? The soul remains. We say unknowingly, unconsciously, what happens to the soul after death? That exactly means the soul remains after death. You know it. That's how you can ask this question. है कि नहीं? उस दिन वो महाराज जी को पूछा ना मैं, unless you know something about the object, can you go to the shopkeeper and ask that object? You know what is sugar, then only you go to the shop and ask, Bhai Saheb, can you give me 5 kilos of sugar? You know about the sugar, and it is weighed by kilo, not by liter, not by feet or meter, neither by liter nor by meter, but it is kilo. So everything you know. That's how you can ask for the object.
Similarly, if you doesn't know anything about God, how can you put question on God? कुछ नहीं जानते हो तो कैसे उसके ऊपर सवाल करोगे? तो ऐसे ही तो होता है सब कुछ। तो अभी जब तुम सवाल पूछते हो मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, तो तुम जानते हो मरने के बाद आत्मा है तभी तो ऐसा सवाल करोगे। आत्मा रहता है, तुम ही उत्तर दे दिया। और बच्चे लोग बोलते हैं ना, इफ अगर बट लेकिन व्हाट माने क्या, इफ अगर बट लेकिन व्हाट माने क्या तो उसका दोस्त कहेगा तू तो बेवकूफ सब कहा, मैं कहूंगा क्या समझे? तुम तो खुद बता दिया, प्रश्न और उत्तर भी दोनों, मेरे लिए क्या छोड़ा? तुम जब पूछा आत्मा का क्या होता है मरने के बाद, इसका मतलब तुम जानते हो अब मरने के बाद आत्मा रहता है, इसीलिए तो तुम पूछा। और थोड़ा बहुत तो चलता फिरता होगा या खाता पीता होगा, ये नहीं जानते हो इसीलिए पूछा You know the self remains after the death. That's how you can ask this question. What happens to the soul after the death? Isn't it? You know it remains after death. With awareness or without awareness, you have heard something about it, though you don't know, and you believe it. That's how you can put such question. You know the self remains after death. In this way only, the soul remains. Soul means it is an entity made up of by 8 elements, that is the 5 units of elements and the seed form mind and the prana and the body with its senses, of course, gone, but the impression, 5 impression, 5 impressions means 5 senses are there in subtle form. Same 5 senses are perceived. They perceive the 5 elements, that's all. So 5 elements means 5 senses, that means 5 the units. They are one and the same. And the mind, the functioning process. Chitta never functions. Chitta gives a push, a momentum to the mind to function. And of course the prana, it always gives the energy. In this way, that eightfold body it carries all the impressions, subtle, from the past till the future. Always it keeps those some impressions. So it travels in a subtle realm for some time, and then it tries to come to the gross world with a gross body. So it creates the gross body for its use as an instrument. This is what happens. So how can you expect mind is lost? Prana also is there in subtle form. Prana is never lost, mind is never lost.
ज्ञान से सभी पदार्थों में असत्यत्व भली भांति पहले सिद्ध हो जाता है। द फॉर्म and the name, they lose their identities by the fire of knowledge। तदनंतर हे भद्र, वासना के विनाश से प्राण और चित्त का विनाश हो जाता है। Then all the desires get destroyed when the instrument is not there। Where will be the purpose of instrument? Vasanas means desires. They want some instrument to multiply. Just as one seed you want to make more, one paddy seed you want to make more so that you can eat a greater portion, and a little portion of it you can keep it for further multiplication. In this way, our karmas also work through the desires. The purpose is to multiply. That purpose is now useless, helpless, hopeless, because instrument is not there. So वासना क्षय हो जाता है जब शरीर और ये सारे मन प्राण सब मर जाते हैं। तो वासना क्या करेंगे? करेंगे क्या? अपने आप कहीं गायब हो जाते हैं। जब हवा नहीं है, तूफान का हवा नहीं है, तो आसमान में बादल कैसे रहेंगे? रह ही नहीं सकते हैं। इसी प्रकार वो कहता है कि वासना क्षय हो ही जाता है, अपने आप हो जाता है। वासना के विनाश से प्राण और चित्त का भी विनाश हो जाता है। जब वासना नहीं और इंस्ट्रूमेंट भी नहीं, शरीर नहीं, अब मन और ये प्राण, चित्त और प्राण करेंगे क्या? कैसे रहेंगे? क्या करना है? कोई काम नहीं, तो काम नहीं है तो घर चलो। स्कूल में टीचर नहीं, पढ़ाई नहीं हो रहा है तो क्या इधर क्या करेंगे? चलो छुट्टी, आज छुट्टी, छुट्टी मनाएंगे। ये लोग सब नष्ट हो जाते हैं अपने आप। इसी प्रकार मनोनाश होता है। ज्ञान से कैसे मनोनाश होता है जब पूछे, इसी प्रकार मनोनाश होता है। ज्ञानी के लिए ये दुनिया कैसे दिखता है सुनेंगे। एक सपना की कहानी, ए स्टोरी ऑफ ए ड्रीम। Somebody was dreaming. He was very thirsty. So he was searching for a well to fetch some water and drink. And he found from a distance a big well. Big well. He tried to reach there with his friends. Arey, come on, we shall have plenty of water there. And that well was standing on the earth. It was not under the surface. It was standing upward. The walls are very strongly made. It was about 1,000 feet high. So when such a round wall is constructed,
It has to stand erect, isn't it? And it has to hold water. So how much pressure will be there? So it was a very big well. So its walls were also very thick. And it was above the level, above the ground, standing 1,000 feet high. A hollow construction, that is called well. And to support it, about a kilometer, more than a kilometer, some slopey constructions were there. Around it, on four sides, there were some small cabins. The watchman would be there. So when the watchman is there, naturally he has to eat and drink. So small hand pumps are there. Hand pump means tube well. And everything is ready for the watchman to survive. In the four sides there were four such small cabins, and others also different type of haphazard, some cave-like, some things were there, but it was in a slopey way up to 200 feet. That slope was there, and it was spread over so much away from the well to support the well. Naturally, the basement should be like that, or else so much water, how it can hold. And to construct it, years were taken by the government. Years after years, big contractors, not one, many, they were engaged to build that well. And he inquired, what for this well is made? For irrigation purpose. For irrigation purpose. The water will be supplied to the fields. That was in a lonely, some pasture somewhere, big area, kilometers it covers, and he with his friends, they went up to the well, and they saw there is no water in it. So the person wanted to see the depth, how one should feel when he goes down. So he took some process, help of some process, and slowly he went down. And he was so much perturbed. 1,000 feet high this well, and I am not being suffocated, how it is. He remained there for more than 1 hour. He was seeing everything, how the construction is and what is there. And he was very wonderstruck, how I am not being suffocated. Then he saw, oh, there is a hole near to him. In the bottom of the well there is a hole, because water is to be cleaned. That means the whole well has to be cleaned, outlet. Big outlet is there.
Plenty of air is coming. So he is not getting suffocated. And then he said, oh, useless. There is no water here. What shall I do here? So he came out of the hole, outlet hole, and he started going, searching for some water somewhere. He was going and going everywhere. All these old materials used for the well, construction of the well, for kilometers away, everything was lying uselessly. Somewhere in some used cements, there will be some iron rods, somewhere some gutters, so many things. So somewhere some wire gauge, everything was lying uselessly. Those which were used long before and useless now. And there was no locality around it. He was going and going and going, no end. And in between he came somewhere little trees, or else only cement and already used materials were spread over. And after long he got some tree and little small herbs were around there, and there was a little, some man with a little shop with water and some snacks and some a little tea and other things. He sat there and asked, what is this, all these lying here uselessly? Then he narrated every story. Long ago, this well was built for this irrigation department. So there was standing another young chap. This fellow who was thirsty, he was talking, see this foolish government, till now there is no water in the well and it is standing upward. Is it called a well? And useless, government spends so much money uselessly. The young chap says, no, I am the engineer and I will fill it up with water pumping from down. The outlet will be closed and I have planned already. I will pump water from down and I will fill it up, I assure you. That was the plan. And he was going on and on. After some time, he saw some children, some jobless people. They were collecting some useless irons and other materials to use it afterwards. So they were collecting here and there, few, very few. And his village was little ahead. He could not reach the home. Uncle Poser hangs a picture by putting a nail in the wall, and he spent whole day he could not hang a picture. Hari Om, Uncle Poser.
No, somebody is striking something there. इसी प्रकार ज्ञानी को कुआं मिल जाता है पानी पीने के लिए। ये बोलना था यार। कुएं सब ग्राउंड के ऊपर होते हैं और पानी नहीं होता है, और वो बड़े भारी कुएं, और उसको खोदाया जाता नहीं, बनाया जाता है। हाँ जी, कुआं का अर्थ ऐसा हो जाता है, वो भी फिर सपने में। ये है ज्ञानी का दृष्टिकोण, कैसे सब दुनिया कैसे सूखा पड़ जाता है, कोई अर्थ नहीं रहता है। आई समझ में? आप पूरा कहानी इंग्लिश में बताया, एसेंस हिंदी में बता दिया, तुम लोग को एसेंस बता दूं। एक कोई प्यासा पानी पीने के लिए निकला, पानी नहीं मिल रहा था, कहीं दूर बड़ा भारी एक मैदान में जा रहा था वो, और कुआं ढूंढ रहा था, तो कुआं उसका आखिर मिल गया। दो चार और भी दोस्त लोग थे, वो कुआं के पास पहुंचता है, तो वो कुआं ज़मीन के ऊपर हजारों फीट ऊपर खड़ा है। कुआं ज़मीन के ऊपर खड़ा है, और उसमें नहीं पानी न कुछ है। तो ये सोचा पानी होगा करके जाकर के ऊपर से देखता है साथियों के साथ, कुछ पानी उनी कुछ नहीं। तो साथियों को कहा मैं थोड़ा नीचे तक जाऊंगा, देखूंगा क्या है, ये ऐसा कैसे कुआं। तो फिर वो ऊपर से कोई रस्सी लगा करके उसको नीचे डालते हैं, और वो ज़मीन में आ जाता है कुआं के तली में, और उधर घंटों रहता है। भाई इधर तो पानी पुनी कुछ नहीं, बहुत बड़ा एरिया, और पानी उनी कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ तो हवा भी नहीं होना चाहिए इसमें, मेरे को सांस कहीं नहीं, क्यों नहीं रुकता है, हवा कहाँ से आता है। तो बाद में देखता है, इधर ढूंढते ढूंढते तो एक किनारे बहुत बड़ा एक 2-4 मकान के ऊंचाई के बराबर इतना बड़ा एक होल है। वो पानी को बाहर निकालने के लिए कुआं से, कभी कुआं सफाई करते हैं ना, तो उसको पानी बाहर निकाल के कीचड़ उचड़ सब निकालना पड़ता है। तो यहाँ पानी बाहर निकालना जरूरत नहीं, नीचे से सब पानी चला जाएगा। ऐसा एक कुआं के अंदर वो देख रहा था, बड़ा आश्चर्य भाई ये कौन सा कुआं है भाई, कैसे। वो आप कहानी जो है ना इंग्लिश में भी बताया, अभी आप हिंदी में बता रहे हैं वही कहानी। हाँ नहीं, आप कहानी पहले पूरा इंग्लिश में बताया, फिर लास्ट का पॉइंट अब सार जो है वो हिंदी में बता दिया, तो लोगों को सार समझ नहीं आया। अच्छा सार अच्छा, इंग्लिश में बताना है। ओहो। कहानी तो सब समझ गया। Did you understand the story, the purpose? That person was walking and going on and on. Everywhere he was passing through such ups and downs in those useless, lying over all those areas of old materials, useless now. It was lying all around. So he was passing through in search of some water, and in between he found some tree and some bushes, and there was a little water and a little soft, what we call खोखा को क्या कहेंगे, हेलो हेलो,
where some tea and some snaps are available. So he was sitting there and he could get little water to drink, and he was very annoyed. See, the government wastes so much of money uselessly. Is it a well? And what for it was made? Nearby was standing a young chap. He said, no, I am the engineer. I will fill it up with water, pumping from down. I have all the plans. And that hole was to clean the water and well. And sooner or later it will be filled with water, and the water will be used for irrigation. And in this way, he drank a little water and went on. And that area was endless. He was walking and on. There was no end to it. And he saw some children, some jobless persons were collecting something out of those useless matters, and for use, reuse. And his house was long far away. He couldn't reach his house. And in this way he was dreaming. And this way the realized souls look on this world. The same well is standing up over the ground. It is meaningless, useless, there was no water. And will it be called as well? Some construction, because it was in well shape. So well has lost its meaning for the seer. When the knowledge dawns that wise people, they see the world like this, meaningless, useless, worthless. Something will be seen that is there. The tree they see just as a picture. Well, he saw, but it was not under the ground, it was up the ground. And meaningless without water. It will be filled up with water from pumps from down, from tube wells. This becomes the meaning of the world. This is how the world means to a wise man. No purpose, no meaning, no value, nothing. Something is seen. Some pictures or some structures, something. And now you can see the dilapidated or destroyed fully the towns in Ukraine. This is how the Gyanis will see. Russia is to be thanked. He has given a true picture of the world. This will happen in the end. Body also happens like that. The skeleton will be thrown somewhere, and the jackals and the dogs will be chewing the dry bones, enjoying them. This is how the world will become for a wise man, useless, meaningless, dilapidated, no purpose, no value, no enjoyment.
got something. That dream was dreamt by some jnani. And that's how the mind gets destroyed. तदनंतर प्रशांत मन फिर देह रूपता नहीं देखता है, अपने बिना से ही पूर्ण पद प्राप्त हो जाता है। अतः मुनिगण वासना को ही मन जानते हैं। In this way, when he attains the highest knowledge, then mind sees no bodies then after. No bodies he can see, just as in the dream. Well means standing up on the ground without water and having holes below. This is called well, and will be filled up afterwards from down water tube wells. It will be filled up, it will be called well. Meaningless. This is how the mind never sees any bodies for use afterwards. Useless. अपने मन के विनाश से ही पूर्ण पद प्राप्त हो जाता है। When the mind gets destroyed, the mind gets, that means mind gets united with the absolute completeness or wholeness. It becomes one with everything. अतः मुनिगण वासना को ही मन मान जानते हैं। So the great saints, they consider the mind is nothing but only the subtle desires. When the desires are lost, no mind can work. It gets lost by itself. यतः चित्त का स्वरूप केवल वासना ही है। अतः तत्व ज्ञान से चित्त का बाध ही हो जाने पर उत्तम स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार वासना का जो स्वरूप है, मन मतलब चित्त ही है, और तत्व ज्ञान होने से परमात्मा का एकत्व प्राप्त होने के बाद ये सब नष्ट हो जाता है। तत्व ज्ञान ही वासना के साथ साथ सभी पदार्थों का बाध करके आत्म तत्व स्वरूप बन जाता है, और आत्म तत्व भी अविचल ज्ञान रूप ही है। यह अनुभवी विद्वानों का मत है। द एक्सपीरियंशियल wise people who have realized this, they opine that the state of self-knowledge has this meaning only. That means the absolute steadiness, habitual, which is never movable. It is the absolute eternal constancy, steadiness, equanimity, where mind cannot work. Mind means a movement, desires, some actions and reactions. So mind cannot be there. आत्मा तत्व भी अविचल ज्ञान रूप ही है। सो नॉलेज इज एब्सोल्यूट स्टेडीनेस, वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी मूवमेंट।
So neither mind, nor intellect, nor prana, nor any idea of any body or any actions or reactions, nothing is there. It is somewhat equal to black hole, where everything is lost forever. Everything loses their identities. Here it is not black hole. Yes, it becomes black hole for those who cannot see it, and white hole those who see it. Same is known as black hole, and for some it is known as white hole. Vaikuntha, self-effulgence, light, hood. Everywhere there is light, and it is by itself, and everywhere everything is available. There is no limitations anywhere in anything. So everything is visible and available everywhere in all conditions. That is called the state of realm of kingdom of Vaikuntha. Vigata Kuntha. Kuntha means limitations or miserliness. Where there is no limitations for anything. That is called the kingdom of Vaikuntha, where the highest Lord Vishnu, the all-pervading God, abides eternally. That is the absolute effulgence. That is called Vaikuntha. Who wants to go there? You have to register your ticket first. Just as few rich people have already registered their ticket to moon. Yes, they will go there and purchase some land there for storage. It will not be rotten. For space also something. Huh? Moon के अलावा space में भी कुछ. Yeah, in the space also. And third will be in Mars. Yeah, get ready with your ticket, advance booking, and and you have to pay the amount also. हाँ हाँ क्यों नहीं जी उसको क्या बोलते हैं वर्चुअल लैंड There you can live for long and enjoy everything. You have no conditions there. This is how the wise men look at this world, and they will look at this world in future also. Virtual world. हे रामचंद्र, इन सब बातों से निचोड़ यह निकला कि रज्जु में सर्प ब्रह्म के सदृश मिथ्या रूप इस संसार का स्वयं ही विवेक ज्ञान से अच्छी तरह विनाश हो जाता है. From all these discussions and analysis, we come to the conclusion, O Ram, by the help of discriminative knowledge. That means when we compare this ever-changing world with the never-changing state,
then it looks useless, and that looks useful, and this vanishes, that exists. That's all. This much we get from this, all so much discussions, breaking our heads. This is what you get. Okay? This confidence or conviction you get after this. And if you don't believe it, or very confusing faith on it, then go on making it confirmed. If you are in waiting list to get your ticket, go on inquiring. Okay? And it looks like a snake at night, which was only a rope. Your misunderstanding of snake and the rope, all these names and forms become useless, meaningless, like the snake becomes meaningless when the rope is seen. It is a structure, no doubt, but it is not a well. Previously you thought this must be something, I may get some water in it. Now you came to know, when you realized the truth, the ground truth, then from ground zero, then you understood it is a meaningless, some structure standing here, and people say it the well. The well loses its meaning and purpose. अब प्रस्तुत विषय का अवलंबन करते हैं. Now the subject we shall come to. भद्र श्रवण आदि से अद्वैत तत्व का अभ्यास, प्राण निरोध और मनोविनाश, ये जो तीन उपाय हैं, उनमें से किसी एक की ही सिद्धि हो जाने पर एक दूसरे सिद्ध हो जाता है. ये तो हम 50वां बार चर्चा कर रखे हैं. एक हो जाने से और सब हो जाएगा. ज्ञान का कोई एक अगर चोर पकड़ा गया तो सारे चोर पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल. सारे पुल पट्टी मिल जाता है. गर्म पानी डालो उसके ऊपर, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा छाला निकालो, चीनी डाल के चींटियाँ छोड़ो तो बोलेगा सच. नहीं तो सुई से चारों तरफ से सुई का एक कंघी लेकर के उसको कंघी लगाओ, खुजली करो, तब उसको सच तो बोलना पड़ेगा, और फिर सारे चोर पकड़े जाएंगे. कौन कहाँ क्या प्लान कर रहा है और क्या तुम्हारा अगली प्रोग्राम क्या था. So he says, when one is controlled or caught, then others will be easily under control. Out of these three. So every time we come to this triangular cooperative society of all the actions, everything goes on in this way. Triangular, the chitta, the prana, and the body. Body means in the gross way, and in a subtle way, the
subtle body, the subtle mind and the subtle prana. So this way the triangular force, cooperative society, by cooperative acting, helping each other, supporting each other, helping each other, and relating with each other, connecting each other, together they do all the job. What is called world or body or the individual or the universal. Call it as you like, see it from any angle you like. On this basis only, people who give importance to the nature, जो माया के उपासक होते हैं, शक्ति उपासक, उनका कहना ये होता है कि ये जंत्र मंत्र सब श्री यंत्र के आधार पर होता है. सारी दुनिया त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण, this way, that way, the triangles only. And pyramids also, many other religions also support this theory. If the nature works, it works in this way only. प्रकृति और माया जो है, माया या ये जो शक्ति का काम करना है, तो ये त्रिकोणीय भाव से काम करता है. और इसमें कोई एक कोना में अगर तुम खड़े हो गए, मतलब ये तुम्हारे बस का हो गया, तो फिर सारे तुम्हारे बस में हो जाएंगे. और उसको इस ढंग से कहते हैं सत्व रजस तमस. एक गुण अगर तुम्हारे कंट्रोल में है तो दूसरे गुण सब कंट्रोल में हो जाएगा. उसके लिए कोई ज़्यादा प्रयास करना जरूरत नहीं. अंग्रेजी बढ़िया सुंदर बोल पाओगे, वो वोकैबुलरी बढ़ जाएगा और सब कुछ हो जाएगा. कैसे? सिर्फ एक छोटा डिक्शनरी ले करके रट दो, हो गया. मोबाइल में सब गूगलानंद सरस्वती का चेला बन जाओ तो सारे अंग्रेजी आ जाएगा. एक पकड़ो, हो जाएगा सब. वही रामचंद्र जी को भगवान वशिष्ठ समझा रहे हैं कि एक अगर तुम्हारे कंट्रोल में आ गया तब तो सारे कंट्रोल में आ जाते हैं. सब अपना दासत्व स्वीकार करते हैं. जब चाहे तब काम में लो, जब रेस्ट करो. If one is under control, other angles are yours only. In this way, in this world, if you can control and master over one quality, whether it is good or bad, there is no objection. Any one. And what to speak of qualities? Any object, single object, if it is under your control, the world, the universe is under your control. What to speak of one object? If you can control one atom, the whole cosmos is under you. Controlling means using it as you like or destroying it as you like. That is under full control. Can you control an atom? Impossible. उसी को सारे दुनिया के सब बड़े बड़े साइंटिस्ट, all the great scientists got together
to blast one atom. Just little before, some years before. What happened? Nothing happened. No blast, nothing. And what came out of it? Some particles, smaller than the atom. That's how when the atom blasts, some particles, the particles of the atom came out. That was seen. It is so subtle, you cannot see it. So, because your vision is changing so rapidly, so they say, all the scientists came to one conclusion, these are called God particles. What is God, nobody knows. And God particles, and those particles, if you pay attention, not vision, if you pay attention, it changes. If you don't pay attention, it remains silent. Your attention changes it. That is it not the meaning of the essence of philosophy? When the mind is stopped, everything is stopped. And when mind starts working, the whole world starts working. Whether it is atom or whole universe, that doesn't matter. This is the essence of all our discussions, and this is the conclusion. भद्र श्रवण आदि अद्वैत तत्व का अभ्यास, प्राण निरोध और मनोनाश, 3 ways were discussed before. These 3 ways are prescribed of 3 types of students. The Shravan, Manan, Nididhyasana for the high class students, and Pranayam for the second class, and Manonigraha is dealing with the mind for the third class. All the 3, they are students, and according to their capability, these 3 types of practice were given to them. And all these 3 qualities, or 3 paths, they end in each other. They end in each other. The triangle ends in each other, isn't it? Of course, this is something new language. You have to use such language only to be clarified. So this is how the world, when we discuss everything, we come to this conclusion only. And if one activates, everything activates. If the one stops working, others have to stop, because they are cooperative workers. हाँ, अरे सरदार आ गए, चलो चलो, बोलो बोलो। एक सरदार होता है। आपको चाय जरूरत है क्या? आपका मन इधर कैसे आया? आपका चाय खत्म हो गया, और थोड़ा ले लो। अरे यार, मदद करो मेरे को। बस हाँ, चल। हाँ साहब, इसको यूट्यूब में नहीं देना, ये चाय बिजनेस। देखिए जी। अच्छा, एक सरदार होता है, हाँ, वो अपने विदेश में जाता है पहली बार,
हाँ। के पास।
ये बोल रहे हैं भगवान वशिष्ठ जी, ताल के पत्तों से निर्मित पंखे का स्पंद जब शांत हो जाता है तब अपने आप जैसे पवन शांत हो जाता है, वैसे ही जब प्राण रूप वायु का स्पंदन शांत हो जाता है तब मन भी अपने आप शांत हो जाता है। क्या सुंदर उदाहरण दिए। वो पत्ते का बना हुआ, ताड़ का पत्ता, नहीं तो और ये बांस का वो जो सिक्के होते हैं, नहीं तो और कितने किस्म के कागज़ का भी बनाते हैं। पंखा होता है, पंखा हैंड फैन, दे यूज इट व्हेन इट इज टू मच hot and sitting outside where is this electrical fan is not possible, they use the hand fan. And he gives the example, when the fan stops, the wind also has to stop. When the fan activates itself, then the wind starts. This is how when the prana stops, the mind stops. स्वामी जी अगर फैन को होल्ड करके खुद अगर ऐसे ही लेंगे तो हाँ, थोड़ा बहुत तो चलेगा, थोड़ा चलेगा। You have to see what is written here. So go on moving. This is how Sardars do. तो वो यही बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, उदाहरण देते हैं। पंखा अगर बंद हो जाता है तो वायु बंद। इलेक्ट्रिक फैन को भी ले लो, इसमें कौन सा अलग होता है? When the fan stops, the wind also stops. And when the fan works, the wind starts. In this way, when the prana stops, the mind stops. And when the mind stops, the prana also stops. देह के अस्तित्व में जब प्राण का उत्क्रमण हो तब आपका यह क्रम भले ही रहे, परंतु साप छेदन आदि से जब देह का अस्तित्व ही न हो तब कौन सा क्रम माना जाएगा? इसी प्रश्न पर कहते हैं, अच्छा, जब शरीर है और ये प्राण का उत्क्रमण या अनुत्क्रमण होता है, तभी तो ये सारा आपका सब थ्योरी का में ये सही हम मान लेंगे। और अगर ये सब नहीं है, क्या ये थ्योरी काम करेगा? ये आपका जितने थ्योरी है ये शरीर और प्राण के ऊपर है। ये अगर शरीर नहीं, प्राण नहीं, तो फिर दूसरा ये दुनिया कैसे चलता है? तो तुम्हारा थ्योरी क्या सच है या झूठ है? देयर इज ए काइंड ऑफ डाउट, इट इज नॉट एग्जैक्टली रिलेवेंट, बट येट यू कैन आस्क, all these theories are based upon the body and the wind to work or not work. Whatever theory you explain to me, if the body is not there, some other things are there, will it work as it is working on the body? Is your theory universal or it is partial and subject to something which is not true in other conditions? How do you, what is your opinion on this?
शरीर का विलय हो जाने पर बाह्याकाश में अवस्थित वायु में मिल जाने के कारण प्राण बाह्याकाशस्थ वायु रूप हो जाती है और वहाँ पर बाह्याकाश में वासना रूप हो इन सब पदार्थों को देखते हैं। बाह्याकाश में देह शून्य प्राण मन से युक्त होकर कर्मजनित वासना रूप जिस तरह के पशु पक्षी मनुष्य आदि शरीरों को देखते हैं उसी तरह के व्यवहारों का भी अनुभव करते हैं। अरे ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। वो बोलते हैं हाँ थ्योरी तो हमेशा काम करता है। कैसे? प्राण शरीर से निकल गया तो जाएगा कहाँ? जैसे आकाश का घड़ा का आकाश, अगर घड़ा को तोड़ देंगे वो बाह्याकाश के साथ एक बन जाता है, ऐसे प्राण भी है वायु। जो प्राण वायु शरीर के अंदर काम कर रहा था, शरीर एक घड़ा के रूप में, घड़ा टूट गया या शरीर मर गया। शरीर मर जाने के बाद वह प्राण बाहर का जो सर्वव्यापक प्राण है, मतलब वायु है, उस वायुमंडल में मिल जाता है। अच्छा, क्योंकि कहा गया सब तत्व अपने अपने जो मौलिक तत्व में लीन हो जाते हैं, तो ऐसे ही प्राण भी अपने प्राण में मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही होगा, प्राण जैसे प्राण में मिल गया, ऐसा मन सारे जो यूनिवर्सल मन है उसके साथ भी मिलेगा। अच्छा, तो मिल गया आने के बाद क्या होगा? वहाँ मिल कर के अपना अस्तित्व को रखते हैं। He gave the example, when the body dies, just as the empty pot is broken, the inside sky becomes one with the outside sky. Similarly, when the body is destroyed, the body inside prana gets together with the outside prana, means wind. So also the mind gets united with the universal mind, and from there they are not silent. They will start doing. Doing means their nature is to move, to do something. So they are inside that universal prana or mind. From that state they will be looking at all this world with a fivefold gaze, and they will see how these bodies are working. So they will think of the bodies, and according to the tendency of that mind and prana, they will think similarly of a body according to the previous tendency, nature of their accumulated results of actions, impressions. They look upon these innumerable different kinds of bodies according to the force of that old actions stored in the storehouse, means chitta, in the universal memory. So from there they will choose somebody. This is fit for me. They will be naturally forced in that direction because of the nature of their previous karmas. It will not be same in every case, it will be different from each other. In that way, they will look for a new body
they will think on it. Oh, this kind of body is suitable for us. And how much time gap, Swami? अभी टाइम के बारे में पूछो मत। टाइम में आएंगे फिर और किसी दुनिया में घुस जाएंगे हम। टाइम कोई निर्दिष्ट नहीं है। वो आपको याद दिलाने के लिए बोला है कि हाउ मच टाइम लेफ्ट, वो पूछ रहे हैं। 5 मिनट। और वो भी वो तो धक्का लगने से 5-10 मिनट चलता रहता गाड़ी, वो इंजन स्टॉप हो जाएगा। गाड़ी चलता रहता। अच्छा, हर तरफ से अटैक। अच्छा, तो वहाँ से क्या करते हैं वो मन प्राण मिल कर के, वो शरीर को प्राप्त करने के लिए मन प्राण खाली नहीं, उसको हम दूसरे ढंग से पहले भी सोच देखे हैं, अभी भी कह सकते हैं। वो मन प्राण तो मुख्य मेंबर हैं जो पुरियाष्टक के, और पुरियाष्टक में और भी मेंबर्स हैं। These two prana and mind, they are the important members of the group, the eightfold body. So they think in this way, but all the 5 or all the 8 are together. The essence of all these 8 they are represented in this prana and mind. Mind goes to the universal mind, prana goes to the universal prana, and from there they will be looking upon the gross bodies moving on the earth. So they will choose according to their previous nature what kind of nature of the results of their actions. They will choose some kinds of bodies and they will think such body we shall create and start working. तो उसके बाद क्या होता है, वो फिर पंच तत्वों का सहारा लेकर के, वो मन और प्राण पंच तत्व का सहारा लेकर के पहले तो जल, फिर बाद में धरती इत्यादि इत्यादि, उसके बाद कोई जो आहार वाला चीज, दुनिया में सब चीज आहार रूप है। कैसे? जैसे एक कारण दूसरे कर्म को जन्म देता है, वो कर्म फिर दूसरे कर्म के लिए कारण बन जाता है। इसी प्रकार ये जो भोजन है, सारे दुनिया भोजन के रूप में व्यवहारित होता है, आपस में एक दूसरे का भोजन बन जाता है। तो उसी में ऑटोमेटिक ये इलेक्ट्रॉनिक फूड प्रोसेस गोज ऑन, one becomes food for the other, so the cycle will go on automatically. Nobody has to start it again. Till the creation is there, one is dependent on the other in every respect, and one becomes food for energy for the other. One energy changes into the other one. In this way the whole universe is acting. सोल चूज करता है कहाँ जाना है। हाँ, उसी को नेचर बेहतरीन जगह जाएगा नहीं। तो फिर गरीब में कौन रहेगा? हैं? फिर नीचे गरीब में कौन जाएगा? तो अगर सोल चूज करेगा अपने आप, चूज इसीलिए करते हैं, इसी प्रकार करते हैं, कहा ना, वो चूज करने का प्रक्रिया, उनका डायरेक्शन उसी तरफ होगा जैसे उससे प्रेरित होंगे।
पूर्व कर्म और जो उसका इम्प्रेशंस मेमोरी जो है उसको कैरी कर रहा है, तो कैरिंग बड़ी बोले ना। अतिवाहिक शरीर मतलब क्या हुआ? वो पूर्याष्टक को अतिवाहिक शरीर भी बोलते हैं। ये इम्प्रेशन को तो वहन करके चलते हैं वो। इसीलिए जैसे ईंक का बटल एक जगह पर दूसरे जगह पर, एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर रखने से जो स्याही है वो कालापन को अपने अंदर रखता है या छोड़ देता है कालापन को? कालापन तो उसका स्वभाव है, वो स्वभाव को साथ लेकर चलेगा जहाँ। और जैसे पहाड़ में एक कहावत है, जब मन कहता है कि बहुत दिन हो गया खाना पीना ठीक ढंग से नहीं होता मिलता है, अरे ये पगली ये तो दिन भर जा कर के खेती जंगल में काम करती रहती, मेरे लिए कभी एक कुछ बढ़िया ढंग का खाना नहीं बनाती है। चलो मैं चलता हूँ 2-4 दिन अपने रिश्ताओं के घर से घूम कर के आता हूँ। रिश्ताओं के घर में जाने से क्या होता है? अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा, आराम भी मिलेगा, कोई नहीं कहेगा काम करो करके। 2-4 दिन मौज मार के आता हूँ यार। तो वो जब ये प्लान करता है मन, तो किस्मत कहता है भैया मैं भी साथ आऊँगा। तू अकेला कहा, तेरे साथ तो मैं हमेशा हूँ। When a person likes to go to their relatives' house for good food and rest and respect, etc., everything he will get. So the luck also says, I am with you, my dear mind. Luck, the fate. Fate says, I am always with you, my dear mind. I am coming with you only. So you cannot enjoy those enjoyments elsewhere. You have to enjoy the same thing wherever you are. In this way, मन, प्राण अथवा वो जो जीवात्मा, इसमें सब में वही चीज़ तो है। उसका कर्मों का जो सार, वो जो उसको एक गति देती है, तो वो तो सब में है, वो तो प्रवृत्त है। और वो कहीं भी जाएगा, चाहे सूक्ष्म जगत में चाहे स्थूल जगत में, कहीं भी जाएगा, वो सब इकट्ठे काम करेंगे। तो पहले मैं वही तो कर रहा हूँ, पहले वो तो पंच तत्व का सहारा ले करके फिर किसी सस्य के अंदर घुसते हैं। वो सस्य आहार के रूप में प्राणियों को मिलता है और फिर रज और वीर्य के रूप में वो सार, भोजन का सार बन करके फिर जब इकट्ठे होते हैं तब फिर वो एक शरीर का ढांचा मॉडल बनाते हैं। चाहे अंडे में हो, चाहे गंदे पानी में हो, स्वेद में, चाहे बीज के अंदर हो, चाहे माँ के पेट में जरायु में हो, चारों किस्म से वो अन्न का सार ही दो रूप से एक हो करके फिर एक शरीर का गठन करते हैं। और वो सारे माल मसाला सब प्रकृति से ही दोहन करते हैं। कहाँ से लाएंगे? पंच तत्व से लेते हैं। और वो शरीर को, छोटा शरीर को फिर बड़ा बनाने लग जाता है। अंडे में भी वो तैयार हो जाता है, स्वेद में भी तैयार हो जाता है, और बीज के अंदर भी कच्चा बीज कभी अंकुर नहीं देता है, सूखेगा वो तैयार होगा, उसके अंदर बीज के अंदर वो जो पोटेंसी वो तैयार होने के लिए टाइम लगता है। कच्चा धान
फील्ड से ला करके दूसरे खेती में बो दोगे, उसमें पौधे नहीं आएंगे। है तो वो सच्चे सार तो है उसमें, लेकिन उसको कामयाब होने के लिए कुछ समय लगता है और कुछ प्रोसेस होता है। तो इसी प्रकार माँ के पेट में भी वो जीवाणु, वो धीरे धीरे समय लगता है उसको एक पांच जो इंद्रियों के साथ उसको एक रूप बनाने के लिए समय लगता है। जैसे मनुष्यों को 10 महीना लग जाएगा, तो गाय भैंसों को भी 10 महीना लग जाता है, परंतु बकरी, ऐसे कुत्ते, बिल्ली, इनको 6 महीना में बन जाता है शरीर। जैसे शरीर होगा ऐसे ही बनेगा, समय लगता है। और भी छोटे छोटे जैसे अंडे, वो तो थोड़े दिन में बन जाए, 15-20 रोज में बन जाएंगे। स्वेदज कभी ज़्यादा कभी कम समय लगाते हैं अपना। 2.5 साल लगता है हाथी को, हाँ। और वो बच्चा भी चलने फिरने के लिए कौन 10-20 साल ले लेता है। और हाथी जिंदा भी रहता तो 300 से कम नहीं, 1000 साल तक जिंदा रह सकता है। इसीलिए उसको इतने बुद्धि और इतने ज्ञान मिलता है। जैसे भी होगा, ये प्रकृति का सब प्रक्रिया अपने आप चलता रहता है। और इसी प्रकार जीव जगत का चक्र चलता रहता है। कोई एक जीव दूसरे जीव में बदल जाता है, या उसी जीव के आकार में बार बार शरीर लेता रहता है। जैसे कर्म का स्वभाव होगा, as per the nature of the action and reactions and impressions collected, they give some momentum to the subtle body to create the other bodies according to the nature. So 84 lakhs of different kinds of bodies are there. These mind and prana, being one with the universal mind and prana, they look upon all these 5 elements and nature, and they choose their future body and collect their ingredients from the nature and create the new body. Not necessarily it should be same as before. It depends upon the nature of the karma accumulated. So it may change. Generally what happens, the male becomes male, female becomes female, body-wise. Generally it goes on. And the human becomes human, the animal becomes animal, but it is not followed always. It may change also. There is no rules and regulations in the nature. That is the rule of nature. No rule is rule of the nature. कोई पूछा स्वामी जी ओशो को, क्या मैं अगले जन्म में गधा बन सकता हूँ? हाँ। तो बोला नहीं, आप इस जन्म में बन गए, अगले जन्म में नहीं बन सकते। तेरी गए। अभी इसको कल के लिए रखेंगे। हमारा जो चर्चा देह के अस्तित्व में जब प्राण का उत्क्रमण हो, तब आपका यह क्रम भले ही रहे, परंतु साप छेदन आदि के जब देह का अस्तित्व ही न हो, तब कौन सा क्रम माना जाएगा? When there is no body, physical body of any kinds of beings, will this law be or process, your theory be activated? Can it have any meaning? Will it be applied in other worlds?
subtle also where there is no grosser bodies. शरीर का विलय हो जाने पर बाह्याकाश में हुआ तो बता दिया। तो बाह्याकाश में देह शून्य प्राण मन से युक्त होकर कर्म जनित वासना रूप जिस तरह के पशु पक्षी मनुष्य आदि शरीरों को देखते हैं, उसी तरह के व्यवहारों का भी अनुभव करते हैं। अप टू दिस वी हैव सीन। So, how this new body is built, tomorrow we shall see it and become the creator. Tomorrow you are the creators. Hari Om. हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जो वशिष्ठ जी भगवान की जय।